इजी होगा। तो देखिए, जो भी वीडियो बनता है ना, ये वीडियो आप लोग के लिए ही बनता है सिर्फ, और कोई नहीं है इसको देखने के लिए। तो हमेशा जो है क्लास का वीडियो बाद में देखिएगा, सुनिएगा तो देखेंगे और बच्चे कैसे बोलते हैं, आपने क्या बोला था, कैसे बोला था, उसमें क्या करेक्शन हो सकता है, या आप जब बोल रहे होते हैं तो बीच में हम कभी कभी रोकते हैं कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं। तो उससे जो है आपको रिवीजन करने में, सीखने में आसानी होगी। चलिए बेटा, जो लोग भी रेडी हैं आदर्श नगर से, आप बोलना शुरू कीजिए। Hello sir, my name is Anmol. बोलो बेटा। Today's my two word is Diwali and Postman. हम्म। Diwali is an important festival of the Hindus. हम्म। It reminds us of the ill deeds of Ram. हम्म। On this day, Ram with Lakshman and Sita returned to Ayodhya from exile. हम्म। People lighting at 10 lamps to greet them. It comes off in the month of October or November. हम्म। People clean their house. हम्म। They whitewash them. The shopkeeper decorate their shops. People buy unit sales, sweets, toys, and crackers. हम्म। क्रैकर्स। At night, people light lamps in row. Children play with fireworks. हम्म। They worship goods, gods Lakshmi. They गॉडेस। eat. हम्म। इसको बोलते हैं गॉडेस। They हम्म। they eat sweets. Some foolish people gamble on this day. This evil practice must be stopped. Must be stopped. Stopped. हम्म। And my second word is postman. हम्म। The postman is a useful public servant. हम्म। He puts on a khaki uniform. हम्म। He has a bag. He puts letters, parcel, and many orders in it. Letters, parcels, and money orders in it. हम्म। He is very हम्म। punctual. He brings us news. He brings us news. हम्म। He works in all weathers. His duty is very hard. हम्म। His pay is very small, Small, less. but he is always cheerful. हम्म। That's चीयर। all, sir. हाँ, तो देखिए आपने इसे चीयरफुल, चीयरफुल मतलब है हंस हंस खेल के बात करने वाला, मतलब मुस्कुराते हुए बात करना, इस तरह से इसको चलते हैं चीयरफुल। Yes, ओके। that's all, sir. बहुत बढ़िया बेटा। और कौन बोलना चाहेंगे? ओके, प्रिया Yes, sir. बोलिए। Sonia. अच्छा, ठीक है सोनिया, बोलिए भाई। बोलिए सोनिया, आई एम रेडी। Today my two words save हम्म। water and Rani Lakshmi Bai. हम्म। Water is clear life. हम्म। There is no life without water. हम्म। We use water in our daily life. इन आवर डेली लाइफ। हम्म। We use it for drinking, bathing, cooking, cleaning it. हम्म। एटसेट्रा। Plant and animal also need water to survive. हम्म।
my two words. Rani Lakshmi. My second word, Rani Lakshmi Bai. हम्म Rani Lakshmi Bai was a great freedom fighter of India. हम्म Her name is written golden letters in the history of your country. our Our country, country. our country. She is popularity and now as झांसी की रानी. She is popularly known as, है ना? known Known as as जानी जाती है. हम्म जी. That's हम्म, all. Sir. बहुत बढ़िया. और कौन बोलना चाहेंगे? ओके, तो देखिए. Sir, Savita. हाँ सविता, बोलिए भाई. Hello, sir. लो बेटा. Today is my two words. हम्म First word is my family. हम्म I have a sweet family. हम्म My family is a small family. There are my 7 members in my family. हम्म There I, my father, my mother, 2 sisters, 2 brothers, and myself. हम्म My father is a teacher and my mother is a housewife. हम्म And my second word is my teachers. हम्म My teacher name is Miss Pooja. हम्म She is a very good teacher. हम्म She has a very good personality. Translity. स्पेलिंग बताइए क्या होगा इसका? Personality. Oh. पर्सनालिटी होता है. That's all, sir. हाँ, ओके, बहुत बढ़िया. तो देखिए यहाँ पर और कोई है आदर्श नगर से बोलने के लिए? सर वो रेडी नहीं है अभी. ओके, कोई बात नहीं. तो देखिए आज का क्लास हम लोग का है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है सिचुएशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इन इंडिया, इन आवर इन एनी पर्टिकुलर स्टेट. जैसे यहाँ पे भी कुछ बच्चे बिहार से हैं, तो भाई कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे बिहार से भी हैं, इंक्लूडिंग मी. तो बिहार में एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं. तो दैट वाज द टॉपिक. लेकिन चूंकि आप लोग कल मिस कर गए थे, क्लास में नहीं बोल पाए थे, तो इसीलिए हम लोगों ने आप लोग 2 वर्ड बोले, उससे भी काम हो गया. लेकिन बाकी बच्चे जो बोलेंगे दैट विल बी मोर ऑन द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम लोग क्लास में जो करते हैं, हम लोग शनिवार को 2 वर्ड्स बोलते हैं एंड देन वी वी पिक अ टॉपिक. कभी कभी हम लोग जो है कभी डिबेट करते हैं, कभी किसी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं. तो आज के लिए, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है situation of education in our place, be it in Bihar, be it in our country, be it anything that we have observed. ठीक है, तो चलिए, जो लोग भी तैयार हैं, प्रिया आप बोलना चाह रहे हैं, बेटा बोलिए. Sir, network problems because leave yesterday. ओके, और कोई बोलना चाहेंगे बेटा? I could not understand much, that's why I'm asking. आपने कहा नेटवर्क प्रॉब्लम, वी कांट स्टडी. ओके, रुद्रा, अंशु, सुप्रिया, और कोई बोलना चाहेंगे? लगता है टॉपिक थोड़ा भारी हो गया. आप लोग ही चूज किए थे टॉपिक, अभी लगता है फंस गए सब. हम्म
प्रिया बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया है। ओके, आई थिंक देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम एट योर एंड। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, लेट मी स्टार्ट। हम ही बोलते हैं, ठीक है। सिचुएशन ऑफ, हाँ चलिए रुद्रा, चलिए आप बोलना चाहेंगे, बोलिए बेटा। Hello, sir. बोलो बेटा। Today's my topic is education system of Bihar. हम्म The education system of Bihar, one of the India's most populous states, faces significant challenge, but it हम्म also has a rich historical legacy. हम्म The state is home to ancient learning centers like Nalanda University, which was a global hub of knowledge in ancient times. हम्म Uh, Most children attend government schools, which are free but often suffer from poor infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म Bihar participated in the National Midday Meal Scheme to encourage attendance by providing free meals. हम्म Bihar has several universities such as Patna University, Magad University, and Nalanda Open University. हम्म Many students in Bihar focus on preparing for competitive exams such as UPSC, IIT, JEE, and medical entrance test. हम्म Many schools lack basic facilities like functional toilets, electricity, and clean drinking water. हम्म Okay, sir, that's all. ओके, आपके साथ साजिद भी हैं। तो हम साजिद थे। आप साजिद ही थे, ओके ओके, वही मेरे को लगा कि रुद्रा का आवाज बदला बदला लग रहा है। ओके, हाँ, रुद्रा यही पर नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा तो कहेंगे। ओके ओके, ठीक है। तो ओके, so this was a good insight into situation of education system in Bihar. And again, मतलब ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ बिहार के बारे में बात करना है, वी आर जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस राइट एज अ स्टूडेंट। So let me spend 2 minutes to talk about my experience with education system, right? So, because I also come from Bihar, where and again, what you guys are going through right now, I have gone through that probably 35 years ago. So obviously, as as Sajid mentioned, that the education system of Bihar certainly needs to be to be looked at with with a difference, because uh, it is it is there as a setup by government, and there are schools and colleges for for people for doing uh, private teaching, coaching, learning as well. But then the overall way things are organized, that certainly needs a revamp, because during my times, which is like 35 38 years ago, uh, we had similar problems to deal with. We had schools, we had teachers, but then was that facility good enough for all of us to to go beyond a certain point and compete with a larger group outside Bihar? uh, Probably not. It certainly needed a more support, a better infrastructure, as you mentioned, Sajid. uh, I mean, one of the biggest problem that I would call out is, first of all, we don't have employment locally, right? So that means people have to go outside Bihar to find jobs of their choice. You talk about any research institute, going to Bhava Research, Atomic Research Institute, or DRDO, ISRO, and all that. Everything is outside Bihar. You don't have anything in Bihar. Uh, Talk about factories, or or the the public sector, corporations, or even private industries. Nothing is in Bihar. Everything is outside. Now, when you have to go outside, you'll end up dealing with people in a different language, and English happens to be one of the most predominant language that is spoken outside.
Do we have the infrastructure for English? Probably not. I was never exposed to the to a setup where I could speak in English till I was in my college, till I was in 12th grade. So net, what I'm saying is, there are things that is to be considered, planned with a future perspective, which was lacking big time in the past. Now with the advent of uh, internet and people having better access to data, and a lot of online platforms and all big small things that we all trying to do together, that has certainly given people a little more exposure. But has it reaches masses? Probably not. So I'm banking big time on the initiative that Mr. Prashant Kishore is running right now, that Jan Suraj thing. I'm hoping that brings some change with respect to overall overhauling of education system in Bihar, and we might see some benefit coming out of that. So this was my 2 cents with respect to the my reading of education system and where we are lacking and what can be improved. So I will stop there. रुद्र, बैक टू यू. बाकी बच्चे भी अपना हाथ खड़ा करके कुछ तो बोलेंगे, मतलब बोलने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो काम का चीज निकलेगा फिर, है ना? चलिए भाई, बाकी लोग हाथ खड़ा कीजिए, रेडी होइए और सुनाइए कुछ. चलिए रुद्र, गो अहेड बेटा. Hello, sir. लो बेटा. Today my topic is a topic about education system in Bihar. हम्म. The situation of the education system in Bihar remains challenging despite Ah, various reforms and Rudra, can you come little closer to the phone? I think you're talking from a distance. I can barely hear you. okay, sir. हम्म. थोड़ा पास आके बोलिए तो सुन पाएंगे फिर. हम्म. The situation of the education system in Bihar remains challenging despite various reform and initiatives. हम्म. Here are the key issues and areas of progresses in current context. That is हम्म. poor infrastructure. A large number of schools lacks basic faculties like proper classrooms, clean drinking water, functional toilets, and electricity, especially in rural areas, are bad. Basic facilities. Yes, sir. Facilities. Hmm. While the education system in Bihar has seen improvements in terms of enrollment and the introduction of some innovation schemes. While Uh, when you say yes, sir. WHILE, that is while. Hmm. While Hmm. deep-rooted issues like infrastructure difficulties, quality of teachings, and high dropout rates continue to hinder its process. Hinder. HINDER. Hinder its progress. Hmm. Yes, sir. Significant investment and sustained reform are needed to create a more equitable and effective education. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया. चलिए, सुप्रिया ने हाथ खड़ा किया. बोलिए सुप्रिया. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my topic is what is the education system in India? Hmm. बोलिए भाई. हमको बस का आवाज सुनाई पड़ा पीछे से. Education in India is primarily managed by the state-run public education system, which falls under the command of the government at three levels: central, state, and local. Hmm. Under various articles of the Indian Constitution and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, free and compulsory education is provided as a fundamental right to children aged 6 to 14. Hmm. The Indian education system is quite an old education system that still exists. It has produced so many genius minds that are making Indian proud all over the world. That's all, Hmm. sir. बहुत बढ़िया. चलिए, अभी देखें कौन बोलना चाहते हैं. रुद्रा और कुछ बोलना चाहते हैं? आपने हाथ खड़ा किया अभी.
ओके, और कौन बोलना चाहेंगे? अंशु कुमारी, अंशु, अरुला गुप्ता और प्रिया, 3 लोगों ने नहीं बोला है अभी। बोलिए अंशु। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is education system in Bihar. हम्म Bihar has been a major center of learning and home of universities of Nalanda, one of the earliest university of India dating back to the 5th century and Vikramshila. हम्म The tradition of learning which had its origin from the time of Buddha to have earlier was lost during the medieval period हम्म when it is believed that marauding armies of the स्पेलिंग क्या है इसका? जो आपने वर्ड बोला मैरियडिंग, उसका स्पेलिंग क्या है? inventors आपका आवाज ब्रेक कर रहा है बेटा। destroyed this center of learning. आपका आवाज पूरा MARAUDI ब्रेक कर रहा था, इसलिए हम नहीं सुन पाए कुछ भी। MAU, MAU, MARAUDING. मराउडिंग। देखते हैं इसका क्या मीनिंग होता है, वो देख लेते हैं थोड़ा। गूगल बोलता है MARAUDING। ओके ओके ओके, देखिए इसको गूगल क्या बोलता है, सुनिएगा। मेरे लिए भी नया वर्ड था। इट मीन्स गोइंग अबाउट इन सर्च ऑफ थिंग्स टू स्टील और पीपल टू अटैक। मराउडिंग गैंग्स ऑफ यूथ। Marauding, मराउडिंग marauding, मराउडिंग मराउडिंग मतलब ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग टू स्टील और नो अटैक पीपल। ओके, ठीक है। हाँ बोलिए बेटा। Bihar saw a revival during the later part of the British rule when they established a university at Patna along with other center of high learning, namely Science College Patna, Prince of Wales Medieval College. हम्म Now Patna Medieval College and Hospitals and हम्म Bihar Engineering College, now National Institute of Technology Patna. हम्म The early lead was lost in the post-independence period हम्म when the politicians of Bihar lost out in the race of getting center of education established in Bihar. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए, जो बाकी बच्चे जितने भी लोग जो बिहार से नहीं हैं, जहाँ जो कि अदर जगह से बच्चे लोग हैं, उन लोग को पता चलेगा आज बिहार के बारे में। आप लोगों ने कम सुना होगा पहले, so you would learn more about uh, what is the finding or things that people don't know otherwise, right? तो मतलब this is just an opportunity for you guys to also know about Bihar. तो चलिए अभी चलते हैं। अगले कौन बोलना चाहेंगे? रुद्रा साजिद ने बोल दिया, तो आप लोग और कुछ बोलना चाहेंगे या फिर हाथ नीचे करना चाहेंगे? और बाकी जिन लोगों ने नहीं बोला है वो लोग हाथ खड़ा करें और कुछ सुनाएं। अगेन जो लोग लेट से ज्वाइन किए उनकी जानकारी के लिए कि आज आज हमारा टॉपिक है सिचुएशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन बिहार और इन आवर प्लेस। सो जो लोग बिहार से, हम लोग बिहार के बारे में बता रहे हैं। बाकी लोग, अगर आपको ज्यादा जानकारी है
अपने देश के स्तर पे कि भाई हाँ इंडिया में पढ़ाई, इसी के एक मेजर डिफरेंस है इंडिया में और यहाँ पे यूएस में, कि इंडिया में देखेंगे हम लोग जो पढ़ाई करते हैं दैट इज मोर थ्योरी बेस्ड, जबकि बाहर के देशों में देखा जाए अगर तो पढ़ाई होती है दैट इज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड, कि भाई मतलब किताब लेके रगड़ने का जरूरत नहीं है, किताब में जो जानकारी है उसको लेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, एंड देन देयर बी लॉट ऑफ प्रैक्टिकल अराउंड इट। आप देखा जाए अगर आई मीन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम बिहार कॉन्टेक्स्ट और फ्रॉम इवन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट at the country level, right? One thing is very evident कि most of the schools they don't have very good lab facility, meaning हर जगह पे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पढ़ाई होती है, लेकिन क्या बच्चे उसका प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्या उनके पास प्रयोगशाला है? नॉट मेनी प्लेसेस आई वुड से। अभी आज के डेट में बहुत सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ गया है जहाँ पे कि they have enough money and then they kind of bring that flavor, but then that is very limited to a small group of students only. So that's one of the major difference that that you can see when you compare our country's education system versus the way it is done outside India. So those are some of the differences. So obviously I would want you guys to talk a little more about things so that we can kind of we all can share it among ourselves. चलिए और कौन बोलना चाहेंगे? आज का लगता है टॉपिक आप लोग ही चूज किए थे, लगता है थोड़ा भारी टॉपिक हो गया, इसलिए सबका मतलब रिस्पांस थोड़ा स्लो आ रहा है। और कौन बोलना चाहेंगे? राजेश मिश्रा आपने ज्वाइन किया है, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज फर्स्ट क्लास और पहले भी आप ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए जैसे नाम पुकारा स्टूडेंट बाहर। ओके, और कोई बोलना चाहेंगे? एनीबडी एल्स? और देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर नॉट ट्राइंग टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, ऐसा नहीं हम लोग शिकायत कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ फाइंडिंग दैट वी आर शेयरिंग। क्योंकि कोई भी कॉलेज या स्कूल अच्छा खराब नहीं होता है, या कोई जगह भी खराब नहीं होता है ऐसे देखा जाए तो। अब मान लिया जाए कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम की हालत गड़बड़ है, नो नो डिनाइंग दैट, लेकिन वहीं से लोग पढ़ के निकलते भी हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। तो अल्टीमेटली इट बॉयल्स डाउन टू कि भाई इट्स अ कॉम्बिनेशन कि भाई एजुकेशन सिस्टम कैसा है और बच्चे कितना मेहनत कर रहे हैं। आप देखोगे अगर ऐसा नहीं कि अगर कोई बढ़िया कॉलेज वहां पे हर एक बच्चा चैंपियन होता है, कॉलेज अच्छा होने से क्या होता है, आपको एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है। बट देन आप मतलब देखोगे जितने भी स्टोरीज को पढ़ोगे ना, कि जो लोग एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं, वो सक्सेसफुल कॉलेज या स्कूल की वजह से नहीं होते हैं, वो अपनी खुद की वजह से होते हैं। उनके अंदर वो एक पागलपन होता है कि नहीं, मेरे को आई हैव टू गेट टू अ पॉइंट वेयर आई डिसाइड माई फ्यूचर। अगर अगर ये डिसाइड कर लें कि चलो स्कूल खराब है, कॉलेज खराब है, क्या करेंगे, तो भाई ये जिंदगी दोबारा तो मिलने वाली है नहीं। पिक्चर भी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक जो मैंने देखी नहीं है बट याद आ गया नाम, तो वही बोल रहा हूँ कि ये लाइफ दोबारा मिलने वाली तो है नहीं। आपको जो करना है इसी लाइफ में करना है, और यू कैनॉट जस्ट पुट द ब्लेम ऑन समबडी एंड से कि अच्छा उसके वजह से हो गया, नहीं। कभी भी दूसरों के बारे अगर कुछ आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, दैट इज हाउ यू हैव टू लुक एट इट। तभी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कैसे करना है दैट 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 वी कैन ऑलवेज डिस्कस एंड फिगर आउट। लेकिन मेरा कहना यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी गुड और बैड, but your future cannot be good or bad. It has to be good, and it will be good only if you are determined to make it good. आपको अपना भविष्य अच्छा करना है, उसके लिए आपको किसी और का के ऊपर नहीं था कि भाई वो करेगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। प्रॉब्लम्स आएंगे, रुकावटें होंगी, बट वी हैव टू फाइट इट आउट। क्योंकि आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे, जो लोग भी लाइफ में आगे बढ़े हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं, they did not have everything given to them as a gift। क्योंकि जब लोगों को बहुत चीज आसानी से मिल जाती है, they don't value it। आप देखोगे जिनके पास सब कुछ है खुद से, उनको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, उनको लगता है ठीक है मेरे पास तो सब कुछ है ही, पिताजी का दिया हुआ सब है, तब क्या टेंशन लाइफ में। तो जिनके पास कम रिसोर्सेज होते हैं, दे आर द वंस हु फाइट इट आउट, एंड
who go beyond their comfort zone to mend their own ways, मतलब आगे सफलता पाने के लिए अपना रास्ता खुद से तैयार करते हैं। तो आप लोग के लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि कहीं पे कुछ चीज़ शॉर्टकट या आसानी से नहीं होता है। ये मान के चलिए कि आपको कुछ पाना है तो उसके लिए रगड़ना पड़ेगा, रगड़ने के लिए तैयार रहिए, मिलना ही मिलना, जाएगा नहीं कहीं, ठीक है? So that is the message. I know today is Dasara, last day of Dasara, so इसीलिए भी शायद से बहुत सारे बच्चे नहीं हैं क्लास में आज। तो I'll probably give it back to you guys. इसको छोटा क्लास ही रखते हैं। और जाइए आप लोग भी जो दशहरा से रिलेटेड जो भी जितना भी बचा हुआ फंक्शन है उसको अटेंड कीजिए। मेक श्योर दैट यू स्टे सेफ, और फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में शनिवार को, ठीक है? तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले शनिवार को, ठीक है? चलिए, एंजॉय रेस्ट ऑफ योर इवनिंग, और फिर बात होगी। चलिए, बाय बाय।